for the opportunity to speak on the Finance Bill 2025. Budget or a finance bill is not just about numbers. It reflects the government's priorities, ideology and intent. This finance will make it very clear that this government is for rich, not for the common people. It works for the corporate, not for the farmers. It protects its own electoral interests, not the economic interests of the country. I am sorry to say this, it's a betrayal of 143 crore Indians. The Honorable Finance Minister announced income tax rebate to individuals earning up to 12 lakhs. I have no problem with it. But you are projecting that as it benefits the entire middle class. It actually benefits only 1 crore people, while Indian middle class comprises of 40 to 50 crore people. If you are Additionally, if you cut excise duty on petrol and diesel, it would have actually benefited the entire middle class and lower middle class. Under the UPA regime, excise duty revenue is 90,000 crore. But in the Amritkal government, excise duty is on petrol diesel around 3 lakh crore. It's a 250% increase on the diesel. 250 crore increase on the petrol and 800% increase on the diesel. Where does this money go? It benefits the corporate most, not the middle class. Honorable Chairperson, the Modi government has gifted 26 lakh crore to corporate on a silver platter. The income tax and the GST collection is more than the corporate tax collection. Moreover, 50% of the GST comes from the 50% of poorest population of this country. This corporate sector pays only to 10 to 12% of the tax. But are these corporates providing adequate employment? See the unemployment rate. It has reached a crisis level. India's unemployment rate is at 8%, the worst in 50 years. Youth unemployment is at 45.4% in 22-23. Practically every second young person in this country is jobless. Female unemployment in urban areas remain 8.4%. Unemployment among Muslims is at 9.2%. Instead of stable employment, youth forced to take into gig work and low-paying jobs. Job security is dead. Salaries are stagnant. The youth of India are being exploited. They voted for hope. What did they get in return? Betrayal, frustration and hopelessness. Honorable Chairperson, MSME have provided employment to around 12 crore people. Now it's completely neglected. 3 crore MSMEs have been shut during demonetization and the mismanagement of GST. I represent the constituency Karur, which is the 4th largest exporter of textiles in the country. It pains me to see that all the companies have slowly shut down and thousands of people losing employment. The number of workers in the informal sector declined by 1.3 crore. Manufacturing employment reduced by 81 lakhs. As a result, manufacturing sector contribution to overall GDP has come down to 12 to 12.5%, when it is 15 to 60% in UPA government. The government is boast about Atmanirbhar Bharat, but its import in China has increased to whopping 83%. This is make in India or made in China. Honorable Chairman, Madam, I would like to understand what kind of tax structure is this. It is blatantly robbed the poor, farmers, common people and manufacturer, but outrightly benefits the corporate. The government boasts about agriculture growth, but reality tells a different story. Over 55% of farmers drowning in debt, with an average burden of 91,231 rupees. Over 1 lakh farmers committed suicide since you assume office in 2014 up to 2022. After this no data, government has not sent any data out. Now, in the last 10 years, this government has given 26 lakh crore to the corporates in the form of bad loan waiver and corporate tax cut. Who's feeding this nation? Farmers or corporates? The government promised to double the farmers' income by 2022 and promised the legal guarantee to MSP. But now it's a forgotten promise because farmers don't buy electoral bonds to BJP. Honorable Speaker, sir, minorities in this country have systematically excluded, economically weakened, politically targeted. Pre-metric and post-metric scholarship for minority students have been slashed by 60% from 2,515 crore to just 1,689 crore. The Maulana Azad Fellowship have been completely scrapped. Funds for the Ministry of Minority Affairs reduced by 2,000 crores when compared to UPA government. This is not a development. This is an economic blockade against minorities. Honorable Speaker, Madam, there is a systematic discrimination against my state of Tamil Nadu.
We are among the top performing states in the manufacturing, IT and export. We contribute significantly to the national exchequer through tax. Yet, what do we get in return? We are completely targeted, systematically discriminated, and face the betrayal and unfair treatment. The government is not just neglecting Tamil Nadu, but it actively punishing us for being successful, politically independent and progressive. If we think this financial bill is an economic document, we are mistaken. This is a political weapon in the hands of ruling party used to suppress the state that do not align with the ideology of the BJP, which is divisive and hateful. I'm finishing with madam. Tamil Nadu is a state that believes in self-respect, federalism, social justice and people welfare. But this government wants to control state like Tamil Nadu through economic blackmail. I will say with all humility that if you will never win this battle, madam, Honorable Chairman, madam, to sum up, this finance bill is a document of discrimination, corporate favoritism and economic oppression. This is not Amrit Kaal, this is a Vikat Kaal, an era of destruction, deception and distress. Thank you. Very good. माननीय सदस्य श्री धीरे सिंह माने जी है नहीं क्या? माननीय सदस्य श्री धीर सिंह माने जी। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में फाइनेंस बिल 2025 पे बोलने का मौका दिया। आज भारत देश एक नई प्रगति की आयाम छू रहा है और इस रफ्तार को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपका ध्यान अनेक चीजों पे आकर्षित करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री मोदी जी का कि थर्सडे को उन्होंने छावा नामक जो मूवी देश में चल रही है उसको पार्लियामेंट में दिखाने का निर्णय लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। लेकिन सर, मैडम, कई ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब का पुरस्कार करते हैं, वो ये मूवी यहां लगाने नहीं चाहते। जिस शिवपुत्र संभाजी ने अपना प्राण इस देश के लिए, देव देश आणि धर्मासाठी ज्यांनी प्राण या देशामध्ये त्यागले, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुपुत्राचा, त्या छाव्याचा चित्रपट आज देशाच्या संसदेमध्ये लागतोय, याचा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला आहे। आणि मला गर्व आहे की संभाजी महाराजांचा छावा हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ही पार्लियामेंट मध्ये त्या ठिकाणी दाखवणार आहे। सर, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो नया रोल मॉडल आगे लेके प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, यह जज्बा उनको मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज से। टैक्सेशन सिस्टम तब के टाइम में जो हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम में, उसको इलैबोरेट करते हुए एक ही टैक्स लोगों पे होना चाहिए। बहुत अलग अलग टैक्स के सेक्शंस कांग्रेस के टाइम में यहां देश में चलते थे, लेकिन उसको अलग थलग दिखाते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें जीएसटी के माध्यम से हर एक टैक्स पेयर को उसमें लाया। टैक्स पेयर सिर्फ टैक्स नहीं भर रहा है सर, मैडम, तो इस देश के प्रगति का भागीदार हो रहा है। एक विकसित भारत का स्वप्न जो लेके भारतवर्ष का आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको आगे ले जाने का काम ये टैक्स पेयर कर रहा है। और उसको मालूम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है, वो रोड्स के माध्यम से हो, रेल्स के माध्यम से हो, बाल स्वास्थ्य के माध्यम से हो, महिलाओं की उन्नति के बारे में हो, हर जगह भारत एक नई ऊंचाई छू रहा है और उसके लिए एक रोड मैप लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बजट में कुछ चीजें जो अच्छी की गई, उसमें 12 लाख रुपए का भुगतान जो करते हैं, 12 लाख का पगार जो लेते हैं या जिनकी आय 12 लाख के नीचे है, उनको टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैडम, यह बहुत क्रांतिकारी निर्णय है जिसके माध्यम से आम आदमी की आय उसको टैक्स फ्री करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। जिसका सिर्फ 60,000 की आय जिसकी थी उसको टैक्स फ्री करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में था, उसको 12 लाख तक ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी सरकार ने करा है। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम इसने, जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं, कर्नाटक सरकार में
एक तरफ यहाँ विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है और इस राजनीति का टच कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बोखला जाता है। இதுபோன்று முக்கிய நிகழ்வுகள், அரசியல் தகவல்களை ஆழமாகவும் மாறுபட்ட கோணத்திலும் அறிந்து கொள்ள மறக்காமல் உங்கள் IND தமிழ் 24/7 பக்கத்தை பின்பற்றிக் கொள்ளவும். உங்கள் ஒவ்வொரு ஆதரவும் இதுபோன்று பல நிகழ்வுகளின் பின்னணியை அறிய உதவும்.